Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class once again. Subscribe my YouTube channel, like and share my videos. Today we will see practice set 34 of profit and loss. From the given informations, we have to frame questions and solve them to find percent profit or loss. See question number 1. CP is given 1600 rupees and SP is 2800 rupees. Let Sarah bought dresses for rupees 1600 and sold it for rupees 2800. Find the percent profit or loss she got. Now solution. Here CP and SP are given. The value of CP is 1600 rupees. Value of SP is 2800 rupees. Now in both the numbers SP is greater than CP. So here we write SP greater than CP. ये फर्स्ट स्टेप हमारी होनी चाहिए. सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, इसलिए प्रॉफिट होगा. यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर सारा गॉट प्रॉफिट. प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. SP की वैल्यू है 2800 माइनस CP की वैल्यू है 1600. सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2800 से 1600 को. वी गेट हियर 1200 रुपीज प्रॉफिट. सारा को कितना प्रॉफिट हुआ? 1200 रुपीज. नाउ वी हैव टू फाइंड परसेंट प्रॉफिट. परसेंट प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमें परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करना होगा. परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100. प्रॉफिट हमने मालूम किए हैं 1200 और CP की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1600. CP 1600 मल्टीप्लाई बाय 100. जीरोस कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट हियर परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 16. 16 से डिवाइड करेंगे 1200 को. 16 7 जार 112. 112 माइनस करेंगे 120 में से. वी गेट 8. 0 ऊपर से लिए. 16 5 जार 80. 80 minus 80 we get remainder 0. Therefore answer will be 75 rupees. Percent profit is equal to 75 rupees. Now here we write a sentence. Therefore Sarah got a percent profit of 75 rupees. Now see question number 2. CP and SP are given and we have to make question. I am using here name Piru. You may use your name. Piru bought a bicycle for rupees 2000 and sold it for rupees 1900. Find the percent profit
or loss he got. Solution. The values of CP and SP are given. CP is 2000 rupees and SP is given 1900 rupees. By comparing these two values, we get CP is greater than SP. So we write here CP is greater than SP. Therefore, Piru got loss. By using formula of loss, we find loss. Loss is equal to CP minus SP, cost price minus selling price. Cost price is 2000 minus selling price is 1900. Subtracting, we get 100 rupees. Now we have to find percent loss. The formula for percent loss is loss divided by CP multiply by 100. लॉस हमें मालूम हुआ है 100 रुपीज़, CP दी हुई है हमें 2000 रुपीज़ इंटू 100. ज़ीरोस कैंसिल कर देंगे हम. नीचे 3 ज़ीरोस है, ऊपर 3 ज़ीरोस कैंसिल करेंगे. We get 10 upon 2. Percent loss is equal to 10 divided by 2. We get 5 rupees. Percent loss is equal to 5 rupees. Therefore, we write here sentence, Piru got a loss of rupees 100 and percent loss of rupees 5. Now see question number 3. Musarrat bought 8 boxes of chocolate for 1200 rupees each. And sold it for rupees 1400 each. Find the percent profit or loss she gets. Here cost price of one article is given 1200. Therefore for 8 articles we multiply 1200 by 8, we get 9600 rupees. It is cost price, and selling price is 8 multiplied by 1400 rupees, that is 11,200 rupees. Now comparing these two prices, cost price and selling price is greater than cost price. SP बड़ा है CP से, therefore मुसर्रत gets profit. मुसर्रत को प्रॉफिट हुआ. अब कितना प्रॉफिट हुआ ये मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज. एसपी हमने अभी मालूम किए हैं 11,200 माइनस सीपी मालूम किए 9,600 रुपीज. Now subtracting 9,600 from 11,200, we get 1,600 rupees. Therefore, Musarrat gets a profit of 1,600 rupees.
परसेंट प्रॉफिट is equal to profit divided by CP into 100. Profit is 1600 and CP 9600 हमने अभी मालूम किए थे, into 100. जीरोस कैंसिल कर देंगे हम. 16 से डिवाइड करते हैं. 16 वन जा 16, 0 0, 16 6 are 96. We get here 100 upon 6. 100 upon 6. 100 and 6 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम 2 के टेबल से. 2 3s are 6, 2 5s are 10, 2 0 0. We get percent profit is equal to 50 upon 3. 3 से डिवाइड करेंगे 50 को. We get 16 and 2 upon 3. 16 3s are 48, 48 plus 2 50, 50 upon 3. Therefore, Musarrat got a percent profit of rupees 16 and 2 upon 3. This will be the answer. See the next question. Question number 4. CP of 50 kg grains is 2000 and SP per kg is 43 rupees. I am using here the name Umar. You may use your name. Frame question. Umar bought a sack of grain of 50 kg for rupees 2000 and sold the grain for 43 rupees per kg. How much percent profit or loss he got? CP is 2000 rupees for the sack and SP of 1 kg is 43 rupees. Therefore, for 50 kg we multiplied by 50. We get 5 3s are 15, 5 4s are 20 plus 1 21, 2150 rupees. Now comparing CP and SP, सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से. Therefore we write here selling price SP, it is greater than cost price CP. Therefore we write here Umar gets profit. Formula for profit is equal to selling price minus cost price. SP और CP की वैल्यूज रखेंगे. 2150 minus 2000 we get 150 rupees profit. उमर को 150 rupees profit हुआ. Now finding percent profit, formula is profit divided by CP multiply by 100. Profit is 150 rupees and cost price is 2000. 150 divided by 2000 multiply by 100. Zeros cancel कर देंगे पहले.
We get 15 divided by 2. That is 7.5 rupees. Therefore, percent profit is equal to 7.5 rupees. Here we write Umar got a percent profit of rupees 7.5 or 7.5 rupees. Now let's see question number 5. Frame question. I am supposing here Ali bought refrigerator. Ali bought refrigerator for rupees 8,600. He paid the transport charges and porterage rupees 250 and rupees 150 respectively. He sold the refrigerator for rupees 10,000. How much percent profit? How much percent profit he got? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फाइनल सीपी हमें मालूम करना होगा. फाइनल सीपी में हम सीपी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और पोर्ट्रेट के चार्जेस ऐड करते हैं. Therefore we get here final CP is equal to 8,600 plus 250 plus 150. We get total 0. 5 plus 5 10 0, carry 1, 4 plus 6 10, 9 8 plus 1 9, 9,000. Therefore final CP will be 9,000 rupees. SP is given 10,000. Comparing selling price and cost price, we get selling price is greater than cost price. Therefore Ali got profit. प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे हम. प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. 10,000 माइनस 9,000, we get 1,000 rupees profit. For finding percent profit, we will use formula percent profit is equal to profit divided by CP multiply by 100. Profit is 1,000 and CP is 9,000 multiply by 100. जीरोस कैंसिल कर देंगे हम. 3 zeros ऊपर से नीचे से. We get 100 upon 9. Now dividing 100 by 9, we get 11 9s are 99 plus 1 100. 11 9s are 99 plus 1 100. 11 and 1 upon 9. This will be percent profit. Therefore Ali got percent profit of 11 and 1 upon 9 rupees.